बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। जैसा कि लेक्चर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके सॉल्यूशंस, उसके डिफरेंट टाइप्स और जो कुछ हमें प्री रिक्विजिट चाहिए न्यूमेरिकल मेथड्स को डेवलप करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के मुतल्लिक, उनको हमने डिस्कस किया था। इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं, बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या है। सो न्यूमेरिकल जो मेथड्स हमारे आउटलाइन का हिस्सा है, हमने दो तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। पहले इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स का सलूशन देखेंगे हम, और फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सलूशन। हम जो मेथड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है methods to solve initial value problem. So the contents for today's lecture are as follows. First, I will tell you about, or we will develop Euler method, and then we will solve one of the example for the Euler method, and then next will be improved Euler method. So Euler method, how it is improved, and then how this Euler method is modified. So we'll be getting this modified Euler method, and then example comparing all the method solution with the exact solution. So how these methods are actually performing numerically when we'll be calculating the error in the case of uh, when we have the exact solution to the system as well. You start with the first method, that is Euler method. Consider general first order initial value problem. dy over dx is equal to f of xy such that y at x naught is y naught. So we'll be dealing initially, as I told you in the last lecture, initial value problem, in fact the first order ordinary differential equation, because once we develop the method for the first order differential equation, we can use that same method for the system of first order differential equation and higher order as well, since higher order is converted into system of or linear order differential equation. So this is actually the general form of first order differential equation, and this is the initial condition. So together this is known as general form of initial value problem. So we'll be writing everywhere this in the form of, so sometimes we write it as y dash is equal to f of xy, or generally we write dy over dx is equal to f of xy, and this is a condition such that y at x naught is y naught. So this is the general form of the initial value problem. So we suppose that we wish to find successively the values of y1, y2, ym, where ym is the value of y corresponding to x is equal to xm. So similarly, y1 is the value corresponding to x1, y2 is the value corresponding to x2, and you know in equispaced spaced setup the xm is equal to x naught plus mh. So for the first point you need h, for second point you need x naught plus 2h, so on. So and h being small, so we'll be looking at the value of h once we develop the method. So here we use the property that in a small interval, in the case of Euler method, we are using this property that in a small interval, you know, a curve is nearly a straight line. So we'll be guessing the solution curve with the help of straight lines. This is actually the main theme in this Euler method. So thus, in the interval x0 to x1 of x, we approximate the curve by what? By the tangent at that point, and then you know, to find out the tangent or the equation of the tangent, for equation of a line you always need two informations. So in this case, what actually we have one point, so this is the one information. So the other information should be another point, or the slope can be any type of information. So generally हमें दो information चाहिए, तो एक तो हमें point दिया हुआ, यहाँ तो दूसरा point पता हो, नहीं तो slope पता हो. तो यहाँ पर इस केस में अगर देखें हमें point पता और solution curve इसकी आनी है y की, इसी से y का solution आना है ना, जो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, तो ये उसका डेरिवेटिव है.
आपको पता है जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन देता है, जो पॉइंट पुट करें उस पॉइंट के ऊपर। तो हम ये पॉइंट ले रहे हैं, तो अगर ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली जो डेरिवेटिव है उसमें वो पॉइंट पुट करेंगे और ये 1 पॉइंट स्लो फार्मूला यूज किया हुआ, y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये जो डेरिवेटिव है ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन से ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट के। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी विल गेट। सो अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें, ये y नॉट उधर जाके ऐड होगा तो विल गेट y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। What actually we have to do, we have to find out the value of y1. So y1 कौन सी वैल्यू जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू x1 है। सो अगर हम x को रिप्लेस कर दें x1 के साथ तो y क्या हो जाएगा y1। So to get the value of y1 we'll replace or we will put x is equal to x1. So we have substituted here x is equal to x1 in the previous equation. So y will then become y1. So we get y1 is equal to y naught plus x minus x1 minus x naught f of x naught y naught. So this x1 minus x naught difference, so this will be the interval length, so this is h. So this becomes y1 is equal to y naught plus h f of x naught y naught. So this is how we can get the value of y1. Since the curve is approximated by the tangent in that interval, so the above equation gives the approximation to y1. So now I explain that fact to you geometrically. We have this solution curve. So this is the curve actually we have to find out. This is unknown to us, but this is the solution curve. So we are getting this curve with the help of lines. So sometimes we call this method as method of lines as well. So what we are doing, we know only the derivative to this curve, that is the original differential equation. So derivative to this curve is known, y dash or dy over dx. We know first point, this is the initial condition, so that's the first point we know. So if we put that point in the derivative, you will get the slope of this tangent. Look at this tangent, this first tangent. So you know the slope, you know the point, so we use 1 point slope formula to find out the equation. So we get the equation of this line. Look carefully. So this equation, we have the equation to this line. Now we have to find out y1. So y1 is what? This is the point of intersection of this line and this tangent. So means in tangent equation, put x is equal to x1, y will be y1. So that's what actually we did, and we get this equation. So this is the point we get. x1 y1. So x1 we know is x naught plus h, and y1 is y naught plus h f of x naught y naught. So this curve, this part of curve is approximated with the help of this tangent. So now look, actually where the cursor is right now, that should be the answer for the y1, but in the case of exact solution. But this is not the case here, so we are getting y1 here, so means there is a difference. So this difference is called the error. This is the exact value where the red dot is, and this is the actually the approximated value. So that the difference will be error. So we'll proceed that case for the interval x1 x2 in the similar way. We will find the tangent to the curve at x1 y1, which will be the slope of the tangent will be f of x1 y1, and this, since this is passing through x1 y1, so you will be getting the same equation. So for the case of y2, these values, this y naught will be replaced with y1 here, and this x1 will be replaced with x1. So we'll get y2 is equal to y1 plus hf of x naught y naught for the second point. So we'll continue that process. So look here, the difference between these 2 points, and that is actually the exact value which is unknown to us, since this we don't know about this curve. ये कर्व हमें पता नहीं है, अगर पता हो तो फिर सोल्यूशन निकालने की जरूरत क्या, हम उसके ऊपर ट्रैक पॉइंट्स निकाल लें। तो ये आपको सिर्फ शो करने के लिए कर्व दिखाई कि एक्चुअल सोल्यूशन ये है और हम जो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं वो इस तरह की आएगी। तो देखिए यहाँ इज अ बिग डिफरेंस, एरर बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है हर पॉइंट्स में। शुरू में कम था, बढ़ता गया। तो हमारा अगला टारगेट होगा हम इस एरर को कम किस तरह से कर सकते हैं। तो वंस वी डेवलप दिस मेथड,
फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको एरर को किस तरह से ओवरकम करेंगे सिचुएशन को। सो अभी हमने जो देखा क्या है, हम नेक्स्ट पॉइंट जो y2 निकलेगा हमारा वो क्या आएगा, look here, so y2 will be y1 plus hf of x1 y1. So proceeding in the same way, in general form we can write the equation as ym plus 1 is equal to ym plus hf of xm ym. So this is known as Euler method and is also called method of lines, as I told you, since we are approximating the curve with the help of lines. So in Euler method, the actual curve of the solution is approximated by a sequence of short lines as shown in the previous figure. So it is possible that the sequence of lines may deviate from the curve of the solution significantly, as I showed you in the last figure. There was a big difference. So the process is very slow, this Euler method, and to obtain it with reasonable accuracy using Euler method, we have to take h very small. So and yh very small. So if you look at the last figure again, so we have these points. So if you will reduce h, means if I make h this half of, then this error will be reduced. So making h small will reduce the error, but there are so many deficiencies. This is a very slow process, so that's why this process needs an improvement, which will lead towards next methods we are going to develop. So this is known as Euler method, but it has deficiency that I told you. It's very slow and we need h value, and for that case we have to do so many iterations. So that's why we'll be developing other technique after that. So first we solve the example for this Euler method. So look at this example. Here we consider the initial value problem. Y dash is equal to x plus 2y, and the initial condition is given as y at x is equal to 0 is 0. So y at x is equal to 0 is equal to 0 is the initial condition. This is the first order differential equation along with one condition. So here we have to find the value for the solution at x is equal to 1, means we have to find out y of 1, and using steps of size h is equal to 0.25, means we have to reach to 1 and we have to take a step of 0.25. So means we'll start with 0 and then we'll make an increment of 0.25. So here we are given this function f of x y is equal to x plus 2y. Initial x naught is 0, y naught is 0, h is 0.25. Thus x1 will be 0 plus 0.25 will be 0.25. x2, it should be x2. x2 will be 0.5, and then we'll add 0.25 again. This will give you x3 as 0.75, and then we'll add 0.25. It will give you x is equal to 1. So we have to find out the value of y on all these points. Since to find out the value at x4, you will need the value of y at x3, and then to compute y3 you need x2. So to calculate y2, and then to calculate y2 you need x1 to compute y1. So look at Euler's method formula. You know, this is yn plus 1 is equal to, general form is yn plus h f of x and yn. So y1 will be y naught plus h f of x naught y naught. So you have all these values, function h and y naught, so you will get these values as 0, since this will be 0 and this is also 0. So this is 0. Now for y2 you need y1, so this y1 is 0, but hf of x1 y1, so you will be getting the value of x1 and y1 into this function, and you will end up with this 0.062500. Similarly for y3, means you have to put n is equal to 2 in this equation, so y3 will be y2 plus hf of x2 y2. Substituting the values, you have already here all the values. Remember, this is x2, this is a type of mistake here. So using these values you will get 0.218750, and y4 is the value of y at x is equal to 1. So this y4 will be
y3 plus hf of x3 y3, which will be 0.515625. So this is actually what we required in the beginning. So value of y at x is equal to 1. So this is the answer, and we have to take these 4 steps since the age was 0.25. So we're starting from 0 and going to 1. So you have to take 4 steps. After 0 you have to go to 0.25, then 0.5, then 0.75, and then it is 1. So this is actually the desired answer. So in numerical analysis, we always have a question. What? How accurate is my solution? Sadly, the answer is not very in our this specific example. So this problem can actually be solved without using numerical method, since it was a linear equation. So you know the method to solve the linear equation by taking you remember all that knowledge of ordinary differential equations course. When you have linear differential equation, you find uh, an integral part which is integrating factor. You find out integrating factor, and then you use all that scheme to find out the solution to the linear differential equation. So this is actual solution to the differential equation which was given in the example. So this is a particular solution. By using the condition, they have found out the values of C1. So this is actually the solution to the original differential equation, means the analytical solution. So if we look this gives you the values from this equation. For x is equal to 0, this is 0, this was the initial condition given. Or at 0.25, it will give you the value 0.03718, but you remember numerical method gives us 0000, and at 0.5 it will give you 0.179570. Numerical method gives us 0.0625. Similarly for 0.75, this value, and what we computed is this one, and then actual value is 1.097264 at 1, but what we get is 51564. There is a hell of difference between these two values. So this 51.5156 is not a good approximation to this exact value. So what was the problem? Look here, I have plotted these. This is actually the exact curve, and this is the guesses that we get. Means, and the tangent first point give you this, tangent at this point give you this value, tangent at this point give you this value, tangent at this point give you this value. So these are the values, these red dots are the values that we calculated by the Euler method, and but it should, the real solution is this one, the exact solution is this one. So this dotted line is far away from this real solution. So then why we are using this method, since this is behaving very strange? So the problem is when we are going further. So look, this is the error here, this is the error here, this is the error. So we can get an even better feel for the inaccuracy if you look at this diagram, what I told you actually. So the numerical solution gets worse and worse as we move further to the right hand side. So what we do, look at this. We might even be prompt to ask the question, what good is the solution that is this bad? So what we get the solution is, so the answer is very little good at all. So it's a very weak answer, means a very weak approximation to the exact value. So should we quit using this method? No, we are developing this method. The why? So then we must know about the reason. The reason our numerical solution is so inaccurate is because our step size is so large. So to improve the solution, shrink the step size. So look, I have calculated with this one with the step size of 0.02. Means after every 0.02, these are the dots. So means to reach 1 from 0, you will have to take 50 steps. Since to reach 1 from 0, you have to take this 0.02 length 50 steps. So these are 50 dots. So now look, now these dots are very near to the blue lines. So means Euler method will give you a good approximation. What? When you have
a step size very small. But here again the issue is, when step size is very small, so you have to make so many iterations. So this method is very slow. So that's why it need certain changes, so which will lead us to our next method. So look at this next method. We called it as improved Euler method. Here we consider a line that is passing through a x node y node whose slope is known. The average of the slope of tangent at a x node y node and tangent at px1 y11. So this y11 means the approximated value of y1. So actually we are going to approximate y1. So this y11 means actually this is the raw approximation we have. So such that this raw approximation we get is with the help of Euler method. So that's why we call it as improved Euler method. So in figure, this AL1 is the tangent to this point AX node Y node, and this PL2 is the line through this point P, but this is having a slope fx1 y11, means the first guess that we calculated, or the first value that we calculated with the help of Euler method. So now PM is the line which is at the mid of these two lines, at the center of these two lines. So its slope will be the average of the slope of these two lines, PL1 and PL2. This is the slope of PL1, so this is the slope of PL2. Take the average, this will be the slope of PM. So our first guess in case of improved Euler method will be a line which will be passing through X node, Y node, but having slope this one. So we'll be using the same technique. So मैं आसान अल्फाज में फिगर से आपको दोबारा बताता हूँ कि improved Euler method में हम कर क्या रहे हैं. बेसिकली हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था इनिशियल गैस एक्स नोड वाई नोड, हमने उस पर टेंजेंट लिया तो वी गेट वन वैल्यू. तो इस पॉइंट पर तो टेंजेंट आ गया, ये टेंजेंट आ गया, ये वाला AL1. अब जो सेकंड पॉइंट है ये PX1 Y1 है, जो हम आइलर मेथड की मदद से निकाल सकते हैं. भी हमने टेंजेंट देखा था, टेंजेंट जहाँ नेक्स्ट को कट करता है वो पॉइंट आ जाता है. तो ये PX1 Y1, ये Y11 जो है वो हमने आइलर मेथड की मदद से निकाल लिया. ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया. अब इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिनल कर्व में पुट करूंगा तो वो स्लोप आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर. तो हम कर क्या रहे हैं एक्यूरेसी में, देखिए ज़रा गौर करें इस लाइन पे. PL1 ओरिजिनल लाइन से दूर है, PL2 ओरिजिनल की तरफ करीब है, ऐसे ही है ना. लेकिन हमारे पास Y11 है नहीं, इसलिए हम अगर Y11 यूज़ करेंगे तो अगली वैल्यू Y22 निकल आएगी. तो हमने इस बेसिकली इस लाइन को जो टेंजेंट है इसको करीब करना है कर्व के, ताकि ये एरर रिड्यूस हो जाए. तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास दो वेरिएबल हैं स्लोप्स, उनका मिड ले रहे हैं. तो देखें ये लाइन पहले इस तरफ को जा रही थी, कर्व ऊपर को जा रही थी, तो ये थोड़ा सा बेटर हो गया. अब इसकी ओरिएंटेशन मिड वाले की यूज़ करेंगे तो ये कर्व की तरफ जाएगा. सो दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट टू द आइलर मेथड, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एज इम्प्रूव्ड आइलर मेथड. सो अब हमारा जो पॉइंट हमारे पास निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, हम स्लोप ये यूज़ करेंगे एवरेज, और पॉइंट वही होगा हमारे पास. तो वन पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे आप, y माइनस वाई नोड इज इक्वल टू x नोड. सो वो हमने यूज़ किया है, y माइनस वाई नोड इज x minus x node, and this is the value of m, which is the average of the slope of tangent at x node y node, and this is the slope of the line at P whose tangent is or the slope of the tangent is f of x1 y11. So this y11 is calculated with the help of Euler method. So for y1 what you have to do, you have to put x is equal to x1. So we'll put x is equal to x1 in the above equation, and after simplification you will get y is equal to y naught plus h by 2 f of x naught plus f of x naught plus h, since x1 is x naught plus h, and y11 is calculated from the Euler method. So this is equal to y naught plus h f of x naught y naught. So to calculate y1 you need, since this equation is not usable, because to compute y1 you need y1. So actually this is not the same y1, so this is a raw guess to this y1. So that's why I use this value from the Euler method. Now if you look at this
this last equation, this is workable. So to find out y1, you need only y naught and x naught. Look at the whole equation. So in general, we can write this equation as this one: ym plus 1 is equal to ym plus h by 2 f of xm ym plus f of xm plus h and ym plus h f of xm ym. This is known as improved Euler method. So then again, there is another possibility that we can make. So this is a modification to the Euler method. So in that case, what we actually do, प्रीवियस में हमने क्या किया था कि जो दो पहला पॉइंट था उसकी मदद से जो दूसरा गैस आया था उन दोनों की एवरेजेस का स्लोप ले लिया था। तो अब कहता है एवरेजेस की स्लोप लेने की बजाय जो आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है वो ही मिड पॉइंट पर ले लो, बजाय इसके कि स्लोप्स का मिड लो। हम क्या करते हैं मॉडिफिकेशन के यूलर मेथड में रिजल्ट को बेटर करने के लिए, लुक एट दिस इक्वेशन, ये टेंजेंट था, ये कर्व जा रही थी, दोनों बहुत दूर थे, ये एरर था हमारे पास, ठीक है। हम इसको रिड्यूस करना चाहते थे, ओरिएंटेशन उसकी तरफ लेकर जाना चाहते थे, तो हमने किया क्या, हमने जो स्लोप निकाली है वो इस पॉइंट पर निकालने की बजाय जो मिड पॉइंट है उसकी स्लोप यूज़ की है। तो ये जो मिड पॉइंट है, अगर x नोट है और x1 है जो कि x नोट प्लस h के इक्वल होता है, तो उनका मिड पॉइंट क्या आएगा, x नोट प्लस h बाई 2। तो यहाँ पर जब आप इसकी y की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, चूँकि h बाई 2 हो गया, तो अभी आइलर फार्मूला हमने पढ़ा, y की वैल्यू क्या आएगी, y नोट प्लस h बाई 2, h की जगह h बाई 2 f ऑफ x नोट y नोट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, x नोट प्लस h बाई 2 और y कंपोनेंट क्या होगा, y नोट प्लस h बाई 2 f ऑफ x नोट y नोट। तो जो c है उसके कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे हमारे पास, ओके, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और अगर वो कोऑर्डिनेट्स हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देंगे तो वो स्लोप बन जाएगी। तो अब हम ये स्लोप यूज़ करेंगे और पॉइंट वही रहेगा। सो इन डैट केस हम करते क्या है कि स्लोप कहाँ पर ले लेते हैं, मिडल पॉइंट, हुज अब्सिसा इज द एवरेज ऑफ x1 एंड x नोट, और वो मैंने बता दिया x नोट प्लस h बाई 2 होगा हमारे केस में। सो ज्योमेट्रिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लाइन एल जो है वो किस तरह से उसके पैरेलल हम लेते हैं। तो ये पॉइंट आता है, पॉइंट पुट किया तो ये स्लोप आ गई। अगेन वन पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ किया, टू कंप्यूट y1 यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू x1, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। सो इन जनरल फॉर्म वी कैन राइट इट एज ym प्लस 1 इज इक्वल टू ym प्लस h f ऑफ xm प्लस h बाई 2 ym प्लस h बाई 2 f ऑफ xm ym. So this is a modification to the Euler method, that's why this is known as modified Euler method. So as I told you in the beginning, now we'll look at the example. So we'll be calculating or solving this example with the help of Euler method, improved Euler method and modified Euler method, and then we'll compare all these results with the exact solution. So here we are considering the initial value problem as y dash is equal to 1 minus y and y at 0 is equal to 0. We have to solve this equation from 0 to 0.3 by considering h is equal to 0.1. So हमारे पास 3 पॉइंट्स बनेंगे, नोड तो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 0, तो पहला पॉइंट का बनेगा 0.1, अगला 0.2 और अगला 0.3. सो गिवन इज f of x is equal to 1 minus y, x नोड is 0, y नोड is 0, h is 0.1, x1 is 0.1, x2 is 0.2 and x3 is 0.3. So we have to find out the value of y corresponding to x1, x2 and x3. First, Euler method. General formula, you know, ym plus 1 is equal to ym plus hf of xm1. So we get put the value of this h, and using the function you will end up with this equation. So put m is equal to 0, you will get the value of y1, put m is equal to 1, you will get the value of y2, and put m is equal to 2, you will get the value of y3. तो मैंने सिंपल फंक्शन से बना लिया ताकि इजीली हम उसको सॉल्व करें। ये फंक्शन यूज़ किए, जो ym है हमारे पास उसकी वैल्यू यूज़ की है जो हमारे पास है, ये फंक्शन बेसिकली यूज़ किया क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे हम जो ym ले रहे थे हमारे पास उसका आंसर उसकी फॉर्म में, यानी इसको ym रहने दिया। ये फार्मूला किस तरह से बना है, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये फार्मूला किस तरह से बना है। ये ym रहा, h रहा, h 0.1 था वो 0.1 हो गया, तो f ऑफ xm ym क्या था 1 माइनस y, तो वो आ जाना था 1 माइनस ym। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे यानी ym प्लस 0.1 इंटू 1 माइनस ym, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1 प्लस 0.9 ym आ जाएगा। तो ये सिंपली हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व दिस सेम विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड Euler। सो इम्प्रूव्ड Euler मेथड का फार्मूला ये हमारे पास, इसी तरह से दोबारा मैंने फंक्शंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई किया, ym प्लस 1 इस फॉर्म में आ गया।
y की तीनों डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। आप डायरेक्ट फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट वे है, मैंने इसलिए इसको जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। सो ये हमारे पास y1 y2 y3 की वैल्यूज आ गई। फिर हमने मॉडिफाइड आयलर मेथड यूज़ किया। सो विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड आयलर मेथड का फार्मूला हमें पता ये है। तो यूजिंग दिस फार्मूला you will get ym is equal to this one, and when you will be substituting the values you will be getting these answers in the case of modified Euler method। एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम दी गई थी उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन करेंगे। अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, या सिंपल इंटीग्रेशन से भी ये आंसर आ जाएगा, नहीं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया इनिशियल वैल्यू को जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज अ सोल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनफैक्ट द पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब y1 क्या था, जब x इज इक्वल टू 0.1 होता है, x 0.1 पुट किया तो ये y1 का आंसर आ गया, y2 का ये आ गया, y3 का ये आ गया। नो कंपैरिजन करने के लिए मैंने रिजल्ट्स को सेपरेटली लिखा है। 0 पे तो इनिशियल पॉइंट था वो 0 आया, 0.1 पे आयलर मेथड से 0.1 आंसर आया था, इम्प्रूव से 0.095 आया था, मॉडिफाइड से भी 0.095 आया था, बट जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो 0.0951625 है, तो ये इसके करीब है। ठीक है जी, 0.9095 0.095 ऑलमोस्ट। सो अगर आप इनका कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप हर एक को एग्जैक्ट में से माइनस कर करके एरर निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली 0.2 पर ये वैल्यू आई आयलर मेथड से, ये इम्प्रूव्ड से आई थी, ये मॉडिफाइड से आई थी, और एग्जैक्ट सोल्यूशन में ये वैल्यू थी। सिमिलरली 0.3 पर 0.271 आई, 0.2587 इम्प्रूव से आई, 0.2587 मॉडिफाइड से आई, तो जो एग्जैक्ट थी वो 0.259181 है हमारे पास। सो दिस इज़ हाउ दीज थ्री मेथड्स, अगर आप देखें तो सबसे अच्छी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो मॉडिफाइड आयलर मेथड से आ रही है, इम्प्रूव्ड और मॉडिफाइड तकरीबन करीब है। सो लेकिन ये आयलर मेथड से गैस अच्छे नहीं आ रहे थे, इन दो की मदद से जो हमारे पास गैस आ रहे हैं वो देखिए एग्जैक्ट सोल्यूशन के एक करीब हैं, और इनको और ज़्यादा बेटर करना है तो वही मेथड जो मैंने शुरू में बताया, यू हैव टू टेक एच वेरी स्मॉल। तो मैंने एच यहाँ 0.1 लिया था, तो अगर आप एच को और 0.05 ले लेंगे या उससे छोटा लेंगे तो जाहिर सी बात है जो अप्रॉक्सीमेशंस या आंसर आएंगे वो एग्जैक्ट के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे। So there are few assignments for you people in this lecture. मैंने चुका we develop the method for the first order differential equation. I haven't solved the second order differential equation, so this is an assignment for you कि आप second order differential equation को solve करेंगे इन तीनों methods की मदद से। Since is a second order तो आपको दो conditions देनी पड़ेंगी। Since it's initial value problem तो मैंने ये जो पॉइंट्स यूज़ किए हैं y01 एंड y'0 इक्वल टू 0 सेम पॉइंट्स पर दी हुई हैं, तो इनिशियल कंडीशंस टुगेदर दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो यू हैव टू सॉल्व दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ओके, एंड सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट 0.1। सो इनिशियली x 0 है तो आपने 0.1 पे निकालनी है, तो एक तो स्टेप है कि आप 0 पहला पॉइंट लें, अगर आप 0.1 ले लें, अगर h आप 0.1 लेंगे, बट हैव रिस्ट्रिक्टेड यू हेयर टू टेक h इज इक्वल टू 0.05 मीन्स यू हैव टू टेक 2 स्टेप्स। तो अगली वैल्यू y.1 की निकालने के लिए आयलर से हो किसी भी आपको दो स्टेप्स में जाना पड़ेगा, मींस आपको y1 निकालना पड़ेगा, y2 निकालना पड़ेगा, ओके। सो y2 विल बी द एक्चुअल वैल्यू, लेकिन y2 निकालने के लिए y1 यूज़ होगा तो इसलिए y1 निकालना पड़ेगा, मींस y एट 0.05 निकालना पड़ेगा, फिर y एट 0.1 निकलेगा। सो आप इसको करेंगे, ये मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए हैं। सिंस द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट किया जा सकता है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर की मदद से दो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। उन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एज आई टोल्ड यू, एक का नाम f1 रख लें फंक्शन का, दूसरी इक्वेशन वाले का नाम f2 रख लें। सो यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो मैंने भी बता दिया था आपको, पहले भी दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, चूँकि दो वेरिएबल दो इक्वेशंस हैं तो ये x y तो और z, ये आपकी चॉइस होगी आप थर्ड वेरिएबल क्या रखते हैं। तो अगर आप z रिप्लेस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को तो नया वेरिएबल z आ जाएगा आपके पास। एज के बारे में मैं आपको ब्रीफ कर दिया, 0.05 है तो y2 निकालना पड़ेगा, y1 जो है वो y एट 0.01 होगा, वो नहीं, आपको y एट 0.1 चाहिए तो सेकंड स्टेप के बाद आएगा। ठीक है जी, एग्जैक्ट सॉल्यूशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसको सॉल्व करने के मेथड जानते हैं तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी आप इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल सकते हैं, और फिर जो आपके आंसर्स आए हैं उनका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास हर केस में एरर आ जाएगा। सो ये स्टेप्स और हिंट्स मैंने आपको दे दिए जिसकी वजह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यू हैव टू सॉल्व दिस initial value problem, second order initial value problem with the help of Euler method, improved Euler method,
and a modified Euler method. Thank you very much. I hope you understand most of the things, but still if you are not clear about something, so you can contact me through these provided links. I will be at your disposal. Thank you very much. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.